हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस बीए 5th सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, उसका वीडियो आप देख सकते हो। नेम ऑफ द पेपर इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम यूके एंड यूएसए। इसका सिलेबस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंग्लिश के साथ साथ इन वीडियोस को पंजाबी और हिंदी मीडियम में भी बनाया जा रहा है। सिलेबस भी आपको तीनों मीडियम में मिल जाएगा। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का वीडियो भी आने वाले समय में आपको पंजाबी और हिंदी में भी मिल जाएगा। आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं। आपसे 15 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 9 का आंसर देना होगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इस तरह से 18 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो देख के वहाँ से समझ सकते हो कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, कैसे आएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इस तरह से हैं। गिव एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एंड नेक्स्ट, राइट डाउन 2 definitions of comparative government and politics. And then define comparative politics. And next, what do you mean by comparative method? And next, what do you mean by interdisciplinary study? And then, what do you mean by His Her Majesty in Great Britain? And then, what is senatorial courtesy? And then, what do you mean by value free study? And next is write down the limitations of the comparative method. And then write down any 2 prerequisites to comparative method. And next is write down the important conventions related to speaker in England. स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ही लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस के वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ पे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। उसी में से तकरीबन आपका पेपर आता है। यहाँ ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो उसमें से भी निकल के शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी आपकी हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन लॉ एंड कन्वेंशंस इन इंग्लैंड? एंड देन राइट डाउन द मेन प्रोविजंस ऑफ द पिटिशन ऑफ राइट्स 1628. एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय शैडो कैबिनेट? And then write down the composition of House of Lords. And next is, why are conventions obeyed in England? And next is write down 2 conventions related to Speaker of House of Commons. And next is write down the types of committees in the House of Commons. And next is write the composition of House of Representatives. And next is write down any 4 weaknesses of House of Lords. And next is, what do you mean by rule of law? And then, what is meant by suspensory veto? And next is, what do you mean by pocket veto? And next is, what do you mean by log rolling? And next, write down 4 functions of pressure groups in Great Britain. And then write down the methods adopted by interest groups. And next is, what is the significance of Magna Carta? And next, give any 2 sources of British Constitution. And next is write down any 3 functions of pressure groups in UK. And then write down any 4 characteristics of parliamentary system in England. And next write down the royal privileges. And next is, what do you understand by His or Her Majesty's opposition in England? And then, what is jury system in Great Britain? And then write down the functions of the Vice President of USA. And next write down any 4 rights of the American citizens. स्टूडेंट्स, कई क्वेश्चंस के आंसर सेम होते हैं, उसको मोल्ड करके डाला जाता है। उसी तरह से यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मोल्ड करके यहाँ लिखा गया है और उसके आंसर कईयों के सेम है। तो इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस में भी होता है कि मोल्ड करके क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, तो उसका आंसर आपने देखना होता है कि सेम ही होता है। तो इस तरह से आपकी पूरी तैयारी इसमें से हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस मोल्ड करके पेपर में डाले जाते हैं। एंड नेक्स्ट, राइट डाउन एनी 2 राइट्स इंक्लूडेड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। And next write down any 2 salient features of the Constitution of USA.
and then write down and 2 salient features of US Constitution. And next is write down any 3 checks over the President of USA. And next write down composition of American Senate. And next is what do you understand by the term delegated legislation. And next write down the scope of the power of judicial review of the American Supreme Court. And next write down original jurisdiction of American Supreme Court. And next is what is the utility of judicial review. And next write down characteristics of American House of Congress. And next is write down the characteristics of the British party system. And next write down any 4 characteristics of political parties in England. And then explain the method of electing the members of the Senate. And next write down 4 features of American federal system. And next, when was the present constitution of USA implemented. And next write down the composition of House of Lords. And next, what is the difference between king and crown. And next, give any 2 sources of British Constitution. And next, why British Constitution known as an evolved constitution. And next, write down any 2 features of British Constitution. And next, write down the main characteristics of unitary government in Britain. And then write down 4 differences between king and crown. And next, write down any 4 functions of the Speaker of the House of Commons. And next, write down any 2 differences between Cabinet and Council of Ministers. And next, what are assesses courts in England. And next, what is the utility of the principle of checks and balances in the American Constitution. And then, what is the utility of the principle of check and balance. And next, mention the merits of checks and balances the American political system. And next, what do you mean by pocket veto. And next, what is meant by filibustering. And then write down original jurisdiction of American Supreme Court. And then write down any 4 functions of pressure group in UK. And then write down any 4 features of party system in America. And next question, what do you mean by lobbying. And then what is the tenure of American president. And next is write 4 features of British party system. Write the methods adopted by the interest group in America. And then what is meant by pork barrel. स्टूडेंट्स, ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस. लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है. और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस का वीडियो भी यही आपको मिल जाएगा. और इसके अलावा आपको कुछ पूछना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो. थैंक यू सो मच. मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में.